Great. Welcome everyone. So there's a variety of uh, you know cities that are here. Okay. See, today's session is very interactive in the sense I do have a broad overview of what I'm going to cover, but more importantly, I would like to use examples or the user flows or the workflows that most of you can relate with. Okay. My workflow you may or may not directly relate with. The whole idea is there are a whole bunch of tools available. How do you use them for either for automation or for simply doing things faster in a better way, or getting your boss off of your back? ये ले चाहिए थे presentation लिए ले. So I'll show you some of the ways that I have done it. Things that would have otherwise taken. For example, I recently attended a 4 hour long meeting, and because of the nature of the meeting, I couldn't record the meeting. And I'm a normal human who cannot remember 4 hours of discussion. So I was like, अब मुझे MOM भेजना है, अब कैसे भेजूं? Traditionally, whatever I've done is I would have written it down detail में, फिर उसको prune करता, उसको edit करता, change करता, etc., etc. I would have done all of that, and then finally, of course, send it across. But I didn't do that because I'm lazy. I'm very lazy, and so that helps. That helps in getting clever. And so what I ended up doing was, I'll show you that actually. I'll try to show you that. वो phone पे होता है, तो I'm not sure कैसे दिखाऊंगा. So I use ChatGPT, and ChatGPT पे आप voice record कर सकते हो. Record नहीं, you can give voice commands, and it translates voice. ChatGPT has so far, and across all my testings of maybe, I don't know, a number of tools, the way ChatGPT understands your tonality, your voice, everything. No other tool has been able to do that for me. Okay. Given that I talk fast, I will also, I'm talking naturally, right? Beach mein, oh, and I'll pause for like 5 seconds or 10 seconds or 15 seconds, trying to recollect my thoughts and so on. ChatGPT will not interrupt. Copilot is too eager. अच्छा रुक गए हो, अच्छा रुको 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 ये ला, उस बात तो सुन ले पूरी. Like, it doesn't, Copilot is too eager to jump in and to help you. It's like an eager little puppy trying to help you out, while ChatGPT is like, तू बोल ले जितना बोलना है. So I was able to recollect from my memory about 8-10 minutes of so I narrated 8-10 minutes of my entire meeting. It picked it up and converted everything into a neat MOM. All of this happened in about what, 6 minutes, 7 minutes of talking, another 2-3 minutes of conversion. I picked that up, pasted in an email, made some edits, basic edits, and shoot. The entire thing took maybe 15 minutes. What otherwise would have taken me easily an hour, 2 hours, and I would have done a pretty shitty job compared to what it was. Right. Sometimes I'll of course do better job than ChatGPT, but in such scenarios which are essentially operational overheads, and that's the whole conversation about today. That how do you utilize different tools available for all the operational overhead kind of a things that none of us enjoy. Yeah. Okay. So can you guys quickly tell me, like 2-3 of you, maybe all of you, quickly, what kind of work do you do? I know some of you, so I know what you do, but feel free to please tell me what kind of work you do, and what's the last in this Saturday है, so पिछले 5 दिनों में बहुत कुछ बकवास चीजें की होंगी आपने. So उसमें से, can you give me an example of few बकवास things that you wish there was an easier way? So I'd like to pitch in. So I am working on a project where I need to create a priority metrics, placement metrics. Now I'll give you context of what I'm trying to build. So for an example, let's say that there's a screen B where all the repeat users of our platform, they come and they land on that screen. Okay. Now, once they have landed on that screen, these customers are transacting customers. So that means there's an opportunity for further transaction and further cross-selling of different product and services for these particular customers. So Okay. there's a clear opportunity, but we are not doing that at this moment. It's just transactional. If it's success or failure,
The way, for an example, you can say on Zomato, when you place the order, on the order confirmation screen, you have different modules on the screens, right? And Hmm? now we, as a product manager, we need to uh, create a priority metrics that what are we recommending, that what kind of the first tile, which is the hero section below the confirmation screen, where maximum customers are going to be getting that visibility, what will we put there, and then second, and then third on the footer, Okay, so that so we put can very generate revenue and so drive let more me engagement. Yeah. yeah. So let me rephrase. So basically, there's a checkout flow, right? The user has already selected, has put everything in the cart, and now he's about to pay. At the correct, is about to pay, or he's Post about post payment. okay. So post payment, the confirmation screen is a good real estate because people like to niharify that screen a little bit, and they want to see what is happening. Like Zomato has done a fantastic job at you know utilizing that screen, the real estate. So your question is, you want to figure out what can be shown there, correct? Priority metrics and placement metrics. श्योर हाँ मतलब वहां पर क्या होना चाहिए, राइट? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं. ओके, इज दिस एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ यू? यू कैन रिएक्ट, नीचे में बटन है. So if this is an interesting problem, then I can show you maybe 3 or 4 different ways of solving this. I can see one angutha. Can I see more anguthas? Yes. Okay, two anguthas. Kapil, of course. Yes. Others, please pitch in quickly. शांतनु का अंगूठा भी आ गया है. Okay, okay, okay. ठीक है. So it's an interesting problem. चलो, let's solve this. Thank you, Kapil, for this. And let me switch this off. And मेरा notifications off है because I don't want to be embarrassed. 1 second. Sure, yeah. Let's get started. Um, I'll show you a variety of ways that at least that are coming to my mind. But I'll just show you कि पूरा workflow क्या रहेगा in when I'm trying to solve something like this. Okay. Mhm. And how I'll use all the different tools that are available to us. Okay, so सबसे पहले I have a bunch of ideas and I can of course jump right in, or I can first, like any sane person, just record or put all the ideas in one single place. कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, all that. ठीक है. So let me jump into Notion. I use Notion as well as yeah, this is not my actual Notion. This is a different account I made only for this class. I don't want to see you guys my uh, Raz. Okay, so let's say uh, एक second. This LangChain thingy मैं दिखाता हूँ बाद में क्या है ये. Okay, so optimizing post checkout experience. Yeah. Okay. Post checkout uh, on mobile app. User stays at I hope you're able to see the screen. Yeah. User Yes. stays at a valuable real estate. It's a screen where the confirmation, where the order and payment confirmation is shown. The users typically spend time here to verify and to confirm if the order is actually placed and if there is any other post payment formalities that needs to be done. They often take a screenshot as well for their own posterity.
And sometimes they will also send this screenshot to their phone or to their friends or family who have a better memory than themselves, or in case the order was placed for someone else. Cool. These are some of the use cases that I can think of. Experience यही होता है. Okay. Now there are a few ways that we can solve this. Okay. Um, अगर मुझे प्रॉपर प्रोडक्ट मैनेजमेंट फ्लो अगर वैसा सोचना है देन मैं क्या करूंगा सबसे पहले. ओके, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ. ओके, बाय द वे यू कुड सी दैट समथिंग ट्रिगर्ड, राइट? So this is your Notion AI kicking in. Okay, Notion AI has a variety of use cases. पहला lesson आ गया आपका. Has a variety of use cases. First is of course to help me write. Okay, so I can command it to write something for me, right? Or you can see this continue writing as well. I can do that also कि यार तू बता मैं लिख रहा हूँ. हाँ, we can optimize the user by providing a clear consent. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्पेस दबाया और एंटर किया, उसने it picked my cue of what I was writing and then I entered and it is just continue. We can optimize you by providing a clear concise summary of the order including all relevant details, blah blah blah, right? तो ये interesting है. Basis these things, what I just recommended as a basis what I recorded as a experience that people typically go through. Notion AI was able to smartly suggest me something कि ये दो चीजें आप कर सकते हो. Fair enough, but this is what I was not going after. Rather, I want to do something else. Again, I can press space and I can press enter, and इससे फायदा क्या हो रहा है कि I'm able to give it instructions, so I'm not getting interrupted. कैसे यहाँ कुछ लिखा, let's go to ChatGPT, paste it there, copy it back. So I'm not doing that to and fro. I'm not losing my chain of thought. I'm not losing my context. I'm not losing anything. Okay, that is one benefit. The second benefit is right now, of course, my Notion is very sparse at the moment. It doesn't have too many documents. This particular workspace doesn't have too many documents. But if it had documents, for example, Kapil, in your case, because you gave the problem, in case you had other documents or other pages where you had all the data, you had all more context, you had more PRDs, you had more metric, etc., etc., I can actually command it to write something like, find the metrics that the business cares about. Which of these metrics are something that I can utilize or I can impact or influence in this screen, in the post checkout screen? List them down. अगर तुम्हारे पास data है of these metrics performing in the last quarter or month or week, you can go further by saying which of these metrics are not performing or are on a declining trend. You can take that. वो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं, तुम ये सब कर रहे हो. लेकिन and then it will give you a list of those metric in the declining trend. अब तुम बता सकते हो कि अच्छा हम लोग ये काम करते हैं, we will keep a space for ad because वो ads बिकते हैं, क्लियर पैसा मिलता है, बहुत अच्छा रहता है. और उसके नीचे में we can keep a dynamic slot which can have different types of cards, correct? Which can have different types of cards, um, uh, uh, catering to different type of metrics. तो अगर मेरे पास 5 मेट्रिक हैं, इस हफ्ते एक डाउन हो गया, दूसरे हफ्ते दूसरा डाउन हो गया, तीसरे हफ्ते तीसरा डाउन हो गया. So I can make different cards catering to different metric, and then depending on which metric is not performing in the trailing 14 days or 21 days or 28 days, उस कार्ड को स्लॉट कर देंगे. And ये this is much more relevant also, not just in terms of metric driven activity, but also geographic, based on the geography that the person is logging in from. अब पुणे में मैं कुछ और दिखा सकता हूँ, पुणे का मेट्रिक कुछ और बदल सकता है, राइट?
बॉम्बे का मेट्रिक अलग, बॉम्बे भी इतना बड़ा है, राइट? सो अंधेरी में हैव अ वेरी डिफरेंट बिहेवियर देन लेट्स से बोरीवली और अदर प्लेसेस. मेक सेंस, राइट? बट एट द मोमेंट मेरे पास डेटा नहीं है. करेक्ट. सो मैं क्या करूंगा? आई डू द नेक्स्ट बेस्ट थिंग विच इज, इसको इसको इग्नोर करता हूं मैं. हाँ. आई वॉन्ट टू कम अप विथ, okay, I need to come up with some cool, clever, yet metric uh, related ideas of what can be done on the order confirmation screen. I need this screen to stay relevant and should not be gimmicky at, at all. Okay. I need this screen to show um, content or uh, action triggers. Action triggers means something, or CTAs, that can nudge the user towards the metric that the business cares about in the geography of the user and or overall. Okay. So what I'm doing here is, if you notice, what I'm doing here is I'm dumping all my ideas in one single place. This concept is called second brain. Okay. Talvinder, sorry, could you repeat what is this concept called? Second brain. Second brain. हाँ, कि मतलब ये थोड़ा busy है तो दूसरे को दे दो. Right? And the thing is, our brain, while our brain is a fantastic piece of an organ, but it has its own limitations, right? It doesn't have perpetual memory, it doesn't have a lot of other issues, right? It has a whole bunch of issues, which is why this idea of second brain comes up, which is something that Notion helps you with. Notion is paid tool. It costs you about $5 to $8, or I think $10 per month. If you want to, like, if you want to use advanced features and so on. It's perfectly okay if you don't use Notion AI. I am not a big fan of recommending कि ये tool नहीं use करोगे तो मर जाओगे. नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. ना इंसान होते हैं ना tools होते हैं. ठीक है. You don't need, right, for anything for survival as such. But Notion AI is what I no sorry Notion is what I end up using quite often. But there's another tool called Obsidian, which is iska, you know, communist. Notion capitalist है तो Obsidian communist है, वो open source है. I'll just show you that. So this is Obsidian. This is open source. You can install it on a local machine. You can of course pay for syncing and few other features, but it's absolutely okay if you're using iOS or something like an iCloud, and you can sync through that as well. You can see it's very similar. It's very similar to what Notion, how Notion is appearing, but Obsidian has its own tricks up its sleeve. For example, you can see on the right side there's a graph of writing, is telepathy, right? तो जब नोट्स बना रहे होते हो, जब लिख रहे होते हो, तो काफी बार होता है कि आपके पास कुछ और भी लिखा हुआ था पहले, या आपको पता है कि इस पॉइंट पे मुझे और डिटेल लिखनी पड़ेगी. So while writing itself, you can start linking it to other ideas, which could be external links or which could be internal links. The internal links may be pre-existing, or you can just create it and keep it कि यार लिखूंगा इसको भी. And once you're done with that, you can actually get a graph like this. The idea is not to give something cool or get something cool. The idea is that when you end up, if you're making something detailed, like for example, software documentation, product documentation, or sales processes or operational processes, it is impossible to write everything in one single document. So you will have an interlinked set of documents
right? And which is where this kind of a graph helps you a lot, because now you know that writing is telepathy. जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, writing is telepathy is connected to on writing, which is connected to books. Writing is telepathy is connected to a singular central idea, which is evergreen notes turn ideas into objects that you can manipulate. And then इसमें बहुत सारे ideas हैं. So if you're a content creator, like on YouTube or other places, for example, now I know I can start with this thread, evergreen notes turn in ideas into objects that you can manipulate. One of the reel can be about calmness is a superpower. Another could be everything is a remix. One could be creativity is combinatory uniqueness. Like nerds having fun here. Evergreen notes. Company is a super organism. हाँ ठीक है, जो भी लिखा हुआ. Yeah. So this is what Obsidian is able to do, and Obsidian was able to do this, or Obsidian is inspired from something else. That tool is called Rome Research, which I think was the first one to introduce the idea of networked thought, or networked set of documents. ये रहा. Yeah, very, very simple, very popular amongst the nerds of the nerds. But it is paid. I don't think they have a free version at all. This is smart, by the way. This is extremely smart. If you are a product manager, this is an extremely smart idea. Lifetime नहीं बोल रहे हैं, lifetime नहीं बोल रहे हैं, 5 साल का $500 दे रहे हो. Very nice. एक बार में आपको पैसे मिल रहे हैं इतने सारे. Very smart. Nice. So anyway, Rome Research is the one which introduced the idea of network thought and second brain and everything. Like second brain has been around since a long time, but this Rome Research basically helped जो boring simple note taking tools थे उनको एक level आगे बढ़ाने के लिए Rome Research helped a lot. And फिर Rome Research से Notion भी चल ही रहा था parallel में, so Notion introduced some of those ideas in Notion in whatever way they could. And Obsidian built a free version of it. And they have a pricing model, but that pricing model is fairly sasta and everything. Anyway, हम लोग अभी Notion पे हैं. So let's go back to Notion. Yes. So now I have a whole bunch of ideas. I can go further, but right now I'm running out of ideas. मेरे पास time नहीं है, and my SPM is breathing down my neck कि जल्दी बता क्या करना है, because मेरे को कल से sprint शुरू करनी है. Correct? तो कल से sprint शुरू करनी है, idea भी नहीं है, PRDA बनानी है. Right? I think the story of every PM, I guess. So, oops. Yeah. Let me just copy this guy. ये हो गया copy. अब मेरे को चाहिए ideas. ठीक है? So, what I'll do is, I'm going to show you 3 different tools to generate ideas. Okay? By the way, I can generate ideas here also. यहीं से शुरू करते हैं. Why to go anywhere? Generate a bunch of ideas that can be used to solve the problem of checkout screen. Okay. Display summary of the order. This could include the items order, the total cost, and the delivery address, make it the blah, blah, blah. Provide a simple button to download or email the summary. This could replace the need for taking a screenshot and would allow the user to easily share the confirmation with others. Fair enough. Show an estimated delivery time. कर रहा है, मेहनत कर रहा है, करने दो. Show an estimated delivery time. Provide a tracking number of link. Suggest related items. This could encourage the user to make additional purchases. Now this is an interesting idea because I can. बंदा अभी just खरीदा है. He is in that, in that pulse वाला moment. उसको बोले कि अच्छा अगर तुम ये 4 आइटम्स अभी के अभी ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारे इस ऑर्डर के साथ ही डिलीवर भी हो जाएंगे. Like, oh shit, ये हो सकता है, चलो ये भी कर सकते हैं. मतलब I'm not saying everybody will do it, but even if you're able to nudge 4%, 3% people, that's a 3% increment in your revenue. Right? So that's
ये इसने नहीं बोला, ये मैंने बोला है, मेरा ये तलविंदर ही है ये। ओके, सजेस्टेड रिलेटेड आइटम्स, फेयर इनफ, ऑफर अ डिस्काउंट रिवॉर्ड फॉर फ्यूचर परचेजेस, एब्सोल्युटली यस। यहीं पे फीडबैक भी हो सकता है, यहीं पे रेफरल भी हो सकता है। ये इसने बोला नहीं है, इसने नहीं बोला, हम लोग बोल सकते हैं। Offer a discount or reward for future purchases. This could incentivize the user to continue shopping with you. Ask for feedback. Show a reminder of the store's return policy. Yes. If you have a good return policy, then you can mention that. You can promote your loyalty program, and you can provide social media sharing button. Okay. Give me, these are obvious ideas. Give me out of the box ideas. I want promotion. uh, and so I need to impress my boss. अरे भाई, डिलीट किसने करने को बोला? डिलीट ही कर दिया। चलो कोई बात नहीं। वर्चुअल अनबॉक्सिंग एनिमेशन, नाइस। Personalized thank you message, nice. Interactive order timeline. Okay, AR preview for relevant products, allow users to preview their purchase. Gamification, offer simple game for users to play with while they wait for their order to process. Story behind the product. That is nice actually. If you're doing something artisanal, this is a very smart idea. Story behind the product. Great, because वो बहुत ही हाई engagement, वो स्क्रीन बहुत हाई एंगेजमेंट की स्क्रीन होती है। द यूजर इज ऑलरेडी पेड, उसको अच्छा लग रहा है कि फाइनली एक नया रिश्ता बना है विद अ न्यू बिजनेस, राइट? सो उस मोमेंट पे इफ यू कैन एक्सप्लेन द स्टोरी एंड लाइक, हाँ, बिकॉज यू फील प्राउड एट द मोमेंट, राइट? यार मैंने देखो बैठ लिया एक और ऑन सम न्यू बिजनेस और व्हाटएवर। तो इफ यू कैन से, गिव देम अ रीजन टू टॉक अबाउट, कह रहे मैंने कल ना एक शर्ट खरीदी थी उससे, दैट शर्ट ना जयपुर से आती है, वहां के फलाने लोग ऐसे ब्लॉक प्रिंट करते हैं और फलाना फलाना, देन दैट जस्ट, it becomes a good conversation starter. Sustainability impact, if that's a thing for your product, then yes. Future product teasers, very smart, very nice. Okay, before it does its thing once again, let me copy this guy. Okay, copied, and I will just paste it here. Okay, let me say out of the box ideas. ये हो गए। अब मैं यहाँ फिर से इसको लिख देता हूँ कि suggest me a list of uh, ideas. Give me a list of ideas of what can I do on the high engagement uh, confirmation, order confirmations, post checkout order confirmation screen. ठीक है, इसने कुछ दे दिया, पहले जो दिया था वो मिस हो गया है अभी, बट कोई बात नहीं। वी हैव अ बंच ऑफ आइडियाज हियर, 10 आइडियाज यहाँ पे आ गए, 10 आइडियाज यहाँ पे आ गए, करेक्ट? सम कुछ इनमें ओवरलैप्स भी हैं, बट वी हैव अबाउट 10 आइडियाज, 20 आइडियाज इन टोटल। आई एम श्योर कि अगर मैं थोड़ा सा और नज करूंगा, आई विल गेट इवन मोर आइडियाज, करेक्ट? नाउ द क्वेश्चन इज, आई कैन नॉट सिंपली कॉपी पेस्ट दिस टू माई बॉस, राइट? मुझे इसको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको डिफाइन करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, एंड आई विल टेक अ डिसीजन कि भाई इसमें से कितनी आइटम्स दिखा सकता हूँ मैं। आई कैन नॉट शो ऑल ऑफ देम, करेक्ट? So now I can of course keep playing with Notion AI, but इस session में that is not the purpose. So I'm going to show you three different tools depending on आपकी हिम्मत कि आपको किसको खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है। अगर आपको कुछ नहीं खरीदना है, then let's go to Copilot. Um, yeah, let's go to Copilot, and I'm going to paste this, and I'm going to say prioritize these for, sorry, for
Okay. So this is what he's saying. Certainly, the order confirmation screen is a crucial touch point. Blah blah blah. Clear transaction confirmation, order summaries, feedback and reviews, cross sell opportunities, loyalty program sign up, next purchase. ये हो गया तुम्हारा कपिल, थोड़ा आधा काम तो हो गया तुम्हारा. Social sharing, personalized thank you message. I don't think thank you message should be so low. I think thank you message ऊपर होना चाहिए. इंटरैक्टिव ऑर्डर टाइमलाइन. इसने ना अभी गधों के साथ सब कुछ डाल दिया है कि सब कुछ करेंगे, सब कुछ नहीं कर सकते हैं भाई. बट इसने फिर भी 10 पॉइंट्स तो दे दिए हैं, राइट. क्लियर ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन, फेयर इनफ. ऑर्डर समरी, फेयर इनफ. फीडबैक एंड रिव्यूज, maybe and okay, so feedback and reviews doesn't have to be very loud, it can be at the very top. Because feedback तो तब लूंगा ना जब feedback मैं ले सकता हूँ for the checkout experience. अभी तो यूजर के पास प्रोडक्ट ही नहीं पहुंचा है, तो it can be just a nudge that hey जब मिल जाएगा तो प्लीज रेट कर देना. Cross sell opportunity is something that I would prioritize for sure. Loyalty program sign up, maybe if I have one. Next purchase incentive, repeat purchases, yes. Useful. Personalized thank you message तो top में जाना चाहिए. Social sharing, it's छोटा सा बटन हो सकता है. Interactive order timeline, maybe yes. Sustainable impact, ठीक है. Okay. If you want to use ChatGPT, तो मैंने चैट जीपीटी अभी 4, बाय द वे सबके पास, आपके पास 3.5, वो आई थिंक इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट then it'll just say ChatGPT 4. It will not tell you which engine it is using. One way to ask that is, for example, I'll just show you. I am the okay. I'll not fool around. I'll just directly ask what engine and specifically which version of GPT am I interacting with? When was it? हाँ, तो ये चैट जीपीटी बोल रहा है. आई थिंक ये ना 4 में इन लोग ने चेंज कर दिया है. नहीं तो पहले आपको एग्जैक्ट वर्जन मिलता था कि कौन सा वर्जन पे आप काम कर रहे हो. ठीक है. एनीवे, आई एम यूजिंग 4. यू विल बी यूजिंग, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट देन यू विल बी यूजिंग चैट जीपीटी 4, विच जो कि स्विच करता है बिटवीन 4 एंड 4. या फिर इट बेसिकली ट्राइज टू फाइंड अ वर्जन विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट फॉर योर यूज केस. ठीक है. एनीवे, आई विल ट्राई टू यूज 3.5, then I'll use 4, and then I'll use so I'll use 4.0 and then I'll use 4. That's it. हाँ, so chat GPT के अंदर में it's important that you structure your prompt थोड़ा सा. Of course you can dump everything and you'll get some answer, but if you want better answers, better quality answers, then yes, give it some structure. Okay. The one of the easiest way to do this kind of prompting, because I think yesterday or day before I was talking to somebody and they were getting overwhelmed with the detail of the prompts that I was suggesting. राइट कि अरे इतना थोड़ा बोलना पड़ता है, बोलना पड़ जाता है, बिकॉज गूगल ने आदत खराब कर रखी है ना हमारी. व्हेन गूगल वाज आवर चैट जीपीटी, राइट. हमारी जनरेशन के लिए तो गूगल ही था हमारा चैट जीपीटी, राइट. सो गूगल ने आदत खराब कर रखी थी, कुछ भी डाल दो आपको अच्छा आंसर मिल जाता था, राइट. और एटलीस्ट यू विल गेट अ बंच ऑफ पेजेस बिकॉज गूगल डिडंट हैव टू वरी अबाउट द कॉन्टेक्स्ट. इट हैड टू वरी अबाउट द लिंक का मैचिंग, राइट. यहाँ पे the best way to think of how chat gpt को prompt कैसे करना चाहिए is to think of it as a dumb intern. Okay, dumb in the sense smart intern, very intelligent intern, but doesn't know anything about what you want. तो उसको आपको स्पेसिफिक, जितना आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे, डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दोगे, वो उतना अच्छा काम करेगा. अगर आप कम दोगे तो अपना दिमाग लगा के कर देगा, बिकॉज इंटेलिजेंट तो है वो. अपना दिमाग लगा के कुछ तो कर देगा कि सर आपको खुश रखूंगा मैं, लेकिन अब आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए तो क्या कर सकता हूँ, है ना. सिद्धार्थ, आई कम टू यू आफ्टर दिस. सो ये हो गया आइडियाज. प्रॉब्लम इज दिस. ठीक है. लिस्ट ऑफ आइडियाज, मैं इसको प्रॉब्लम के बजाय ना कॉन्टेक्स्ट बोल देता हूँ. कॉन्टेक्स्ट बिकॉज दैट्स
more accurate. List of ideas. अगर बोलता हूँ task, you are the world's best product manager, and you will help me define the priority of the suggested ideas. Then you will describe why you think these ideas are prioritized the way they are. Okay. The metrics they will impact, the timeline it will require to be to build. Okay. और क्या चाहिए होता है? मेट्रिक हो गया, टाइमलाइन हो गया, the effort required to build, and then utilize prioritization frameworks to reprioritize. Notice what I'm doing. To reprioritize the suggested list. Why am I doing this? Because, okay, just like our brain, right? The way our brain works, right? Maybe ideas, I'm sure if I start collecting ideas from all of us, we will be able to come up with 20, 30, 40 ideas, right? But in no particular order. करेक्ट, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है उसका, जो दिमाग में आ रहा है आप बताते जा रहे हो, उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया आपने, करेक्ट। लेकिन जब आइडियाज आ गए एंड डॉक्यूमेंट हो गए, उसके बाद उसको रीप्रायोरिटाइज करना आसान हो जाता है। दैट इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, दैट इज हाउ वी वर्क, राइट। सेम थिंग यू विल सी दैट इफ आई डायरेक्टली हैड आस्क्ड इट टू गिव मी अ प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट एंड वहीं पे रुक जाता, इट वुड हैव गिवन मी अ डिसेंट आंसर, नॉट अ वेरी गुड आंसर। बट मैंने उसको बोला पहले लिस्ट दे दे, अब ये सब देख, अब एक काम कर, रीप्रायोरिटाइज कर दे। सो देन इट बिकम्स, यू विल सी दैट द रिजल्ट्स आर बेटर। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड न्यूरल नेटवर्क्स, यू विल नो कि ये क्यों हो रहा है। बट अभी के लिए बस कंपेयर दैट टू हाउ अ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स एंड हाउ यू ऑपरेट, ठीक है। लेट्स सी, आई कैन गो डीपर इनटू दिस प्रॉम्प्ट, बट सफिशिएंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन राइट नाउ। ये 3.5 है बाय द वे। हाँ, हाई प्रायोरिटी आइडियाज हो गए, डाउनलोडेबल रिसीट, naturally metric improve users by providing convenient receipt, timeline short 1 to 2 weeks, effort is low, reasoning essential for user convenience and compliance purposes. Fair enough. Personalized offers directly impacts revenue and enhances user engagement based on historical data. It's a medium thingy. Effort, timeline and metric की बात कर ली इसने, ठीक है। अब इसमें एक इशू है कि जो मेट्रिक का इम्पैक्ट है उसका क्वांटिफाइड नहीं बोला है कि उसे डेल्टा कितना होगा, करेक्ट। वो जो मैं अभी नेक्स्ट पूछूंगा इससे। क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज पे आ गया, ये 3 हाई प्रायोरिटीज आ गया। अगर वो जगह नहीं है आपके पास एंड यू वांट टू कीप इट लाइट एंड सिंपल, देन ओनली 3 थिंग्स, डाउनलोडेबल रिसीट, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स एंड क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज, फुल स्टॉप, नथिंग एल्स। मीडियम प्रायोरिटी आइडियाज हो गए, रिकमेंडेशंस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स, सोशल मीडिया शेयरिंग, नेक्स्ट परचेज कूपन। बिकॉज आप आजकल आज की डेट में व्हेन यू परचेज समथिंग, आई डोंट थिंक एनीबडी, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव दैट थिंग फॉर शेयरिंग कि देखो मैंने कुछ खरीदा है, राइट। वो जा चुका है, राइट। सो वी कैन ऑलवेज आर्ग्यू अगेंस्ट इट एंड वी कैन रिमूव दिस, करेक्ट। नेक्स्ट परचेज का कूपन दे सकते हैं। लो प्रायोरिटी में आ गया इंटरेक्टिव ऑर्डर टाइमलाइन, वर्चुअल अनबॉक्सिंग, सर्वे और फीडबैक फॉर्म, लॉयल्टी प्रोग्राम साइन अप। अब रीप्रायोरिटाइज करने को बोला मैंने, अब इसने राइस फ्रेमवर्क यूज किया। डाउनलोडेबल रिसीट, नेचुरली रीच, इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस, एफर्ट। पर्सनलाइज ऑफर्स दे दिया इसने, क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू गो टू हियर एंड आई एम गोइंग टू ऐड। नाउ नोटिस व्हाट आई कैन डू हियर। अब इस पेज के अंदर में आई वांट टू क्रिएट अ न्यू पेज, सो आई विल डू स्लैश पेज एंड द न्यू पेज विल ओपन अप। I'll say chat GPT 3.5 prioritization. Done. अब लग रहा है कि मैं बॉस को भेज सकता हूँ कुछ, कुछ तो आ गया है, कुछ तो मिल गया है, राइट। बट आई एम नॉट गेट हैप्पी बिकॉज यू नो
high agency person, so I want to do really, really good job at everything I do. So I'm going to go back to ChatGPT and I'm going to say, this looks good. I want the impact to be quantified using uh, online data of comparable sites and products. Um, Kapil, is this? Can you give me the category of your product? So I think the example that we have taken is for uh, like delivery or Zomato or Swiggy kind of app. But ठीक है. yeah, no तो worries. Zomato But Swiggy ले ले food delivery का. yeah, but what I was thinking, what I'm working on is a fintech thing. It's slightly different, but yeah, similar. ओके, अब ये कुछ नंबर्स देना शुरू कर चुका है. ठीक है. आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस गाय ऑल्सो बिकॉज अभी रिसर्च किया है तो कहीं तो जाना चाहिए. पेस्ट कर देते हैं. चलो वापस आते हैं. एंड आई एम गोइंग टू पिक दिस गाय अगेन. कॉपी एंड So Talvinder, one question here. यस. On the Notion, I saw that there's this option that came in for database. So यस. is there an option where we can also add some tables, or यस. you can and you can add a good, like it's not a toy table. You can actually add good amount of tables, which is where things become very interesting, because if you have the database yeah, of your numbers plus you have this kind of documentation available plus you have other information, then in सबको hmm, मिला के what you will end up getting is you can actually get very, very good answers. See, Notion AI, personally, I'm not a very big fan of Notion AI because they made things earlier, like for a good chunk of their existence, they made things very, very difficult. अब जाके थोड़ा आसान करने लग गए because Obsidian and all everything else has made life थोड़ा सा difficult for Notion. Notion is perhaps the only known product to me which has been built, managed, and maintained, or like जो typically engineers बनाते हैं इस type of products, right? या इंजीनियर्स आर द लीड थॉट. जैसे रोम रिसर्च जो है, ऑब्सीडियन जो है, वो इंजीनियर्स ने बनाए हुए हैं और वो दिखता भी है. नोशन एआई इज वन ऑफ द ओनली प्रोडक्ट्स दैट आई नो ऑफ जो कि जिसमें जो लीड पीपल हैं, दे वर प्रोडक्ट मैनेजर्स. Okay, so which is why a lot of this work that they have done actually is very, very suitable for product managers. A lot of the features are extremely useful for product managers. Anyway, coming back, what I've done here is I've changed the model from 3.5 to 4.0. Okay. Uh, Quantify the impact uh, using online data for a food delivery app. Okay. What else? Use tables wherever suitable. Justify your prioritization framework uh, utilization. As in, if you are going to uh, assign a weight or a rank or a relative weight or anything else, do make sure to explain your reasoning. So one of the big issues is कि हम लोग, जैसे पिछले वाले में क्या हुआ, उसने बोला राइस है, रीच 3 है, इसका ये है, इसका ये है, रीजन नहीं दिया. Correct. So as humans, it's important for you to identify or ask कि मुझे reasoning दो, and if the reasoning is not justified, please make sure that you introduce your own reasoning and ask it to fix it. Yeah. Lastly, use 2 or 3 prioritization frameworks to cross verify the final list. Now here's a little kicker, okay? 1 second. Take a step back. This statement, take a step back, is actually
has white papers लिखे हुए हैं, white paper नहीं, research papers लिखे गए हैं, which explains कि अगर आप prompt में take a step back बोलते हो, it's not just something that I'm saying, take a step back बोलते हो, it leads to better quality results. Which is what I'm saying again and again कि if you start treating it थोड़ा सा respect के साथ में कि तो intern है, उसको मैं intelligent intern है, so you'll get better results. Take a step back now and identify, take a step back and realize that a food delivery product is a B2C highly competitive product where while on one hand I need to do things that is expected, I do need to build cool features from time to time which have their utility, but at the same time are executed, are built differently. This helps in buzz, plus helps in staying relevant while delivering value to the customer. So make another table to talk about the coolness quotient of the suggested ideas, and then make one more prioritization list of ideas that showcases that includes this quotient. Okay, so 4O is a very eager GPT. Okay, so it gives you results very quickly, which also means there's a high chance that it can hallucinate. तो थोड़ा सोच समझ के यूज करो, okay, और double check करो. Okay, initial prioritization, I'll start by listing the ideas and categorizing them based on their impact on business metrics and user experience. ठीक है, high impact on business metrics, recommendation, blah blah blah. Moderate impact क्या आएगा, survey, social media sharing वगैरह. High impact on user experience, virtual unboxing वगैरह. Moderate impact on user experience ये. ठीक है, अब prioritization using value versus effort use कर लिया इसने, and recommendation of similar products, वैल्यू हाई है, एफर्ट लो है, रिलेटिवली 1.67 हो गया, ये सब हो गया. इसके बेसिस पे प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन वैल्यू इफेक्ट रेशियो, व्हेन नेक्स्ट परचेज कूपन इज 5. राइट, नेक्स्ट परचेज कूपन इज 5, डाउनलोडेबल रिसीट इज 4, लॉयल्टी प्रोग्राम साइन अप. सो अगर मेरे पास मुझे 3 आइटम्स बनानी है तो ये बना सकता है. हाउस एवर बोरिंग इट इज, बट यही बनाना चाहिए, बिकॉज भाई दाल चावल तो चाहिए होते हैं ना घर में, बाकी हर दिन तो नहीं खा सकते ना राजमा चावल. So you need to get the basic things right, and this is a no-brainer, right? And right from an APM to a VP will say the same thing, except कि VP explain कर पाएगा क्यों बनाना चाहिए, APM बोलेगा हाँ ये होना चाहिए, पता नहीं क्यों होना चाहिए. Correct. Okay, prioritization using the rice scoring model, because मैंने तो बोला 2-3 मॉडल यूज करना, तो उसने वैल्यू ओवर एफर्ट भी डाल दिया और राइस भी दे दिया. राइस को भी देख लेते हैं. नेक्स्ट परचेज कूपन इसमें भी टॉप पे आया, डाउनलोडेबल रिसीट भी टॉप पे आई, लॉयल्टी प्रोग्राम साइन अप भी टॉप पे आया. इसके बाद आया रिकमेंडेशंस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट. इसने क्या बोला था, सर्वे या फीडबैक फॉर्म. दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट टू डिफर. नोटिस दिस, ये नीचे आया. करेक्ट. एंड दिस आल्सो शोज राइट कि 2 पैरामीटर प्रायोरिटाइजेशन वर्सेस 4 पैरामीटर प्रायोरिटाइजेशन, फर्क है ना. यू कैन गेट मोर ग्रैनुलर, यू कैन गेट मच मोर नुआंसेस जो कि आपको नहीं मिल सकते हैं वैल्यू एफर्ट इज टू हाई लेवल. इट्स गुड फॉर लाइक क्विकली सीइंग कि अच्छा क्या हो सकता है, लगभग क्या हो सकता है, राइट. अगर आप मीटिंग में बैठे हुए आपको तुरंत बताना है तो वैल्यू एफर्ट करके आप तुरंत दे सकते हो आंसर. बट अगर आपको ढंग का काम करना है देन यस यू नीड टू यूज समथिंग मोर इन्वॉल्व. देन हमने ऐड किया कूलनेस क्वेश्चन, विच इज
my thing. CQ. So इन सबको ऐड किया गया, प्रायोरिटाइजेशन इंक्लूडिंग coolness quotient. अब आ रहा है next purchase coupon again, downloadable receipt again, loyalty program sign up. So it has not changed actually anything. I think लगभग similar sequence में continue कर देता हूँ. And this is the final prioritization list with the top 5 ideas. And now you have plenty of data to convert into a nice little presentation for your boss. Right? Okay. लेकिन अब मैं एक चीज और दो चीजें और दिखाता हूँ कि अब मैं इसको हाउ डू यू राउंड दिस अप. ओके, मेरे पास डेटा नहीं है. राइट, आई डू नॉट हैव इनफ डेटा फॉर क्या बोलते हैं, आई एम रिलाइंग ऑन वट एवर डेटा दिस गाय इज पुलिंग फ्रॉम द इंटरनेट. राइट, और इनफैक्ट इसमें डेटा यूज भी नहीं किया इसने कहीं पे भी. मैंने बोला था क्वांटिफाई करने के लिए और डेटा लेने के लिए, लेकिन डेटा लिया नहीं इसने 409. बस आई टोल्ड यू राइट कि वो थोड़ा सा बहुत ईगर, ये गोल्डन रिट्रीवर है कि हाँ चलो भागते हैं. उसको नहीं पता कि बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बेचारा. सो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर इट एंड ट्राई टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डेटा फॉर इट. ठीक है, डेटा फाइंड करने के लिए आई विल शो यू सम. Give me a second. I'm stopping the share because I need to log into something. Yeah, okay. Sharing back again. Yeah, you can see the screen. This is called Tavili AI, and it can be used to find any kind of research. Okay, so let's jump in. क्या रिसर्च करना था मुझे? मुझे रिसर्च करना है. Uh, mm, 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 mm. नहीं, दिस इज नॉट अ गुड क्वेरी बिकॉज प्रोडक्ट मेट्रिक में वो कुछ भी दे सकता है मुझे, सिर्फ नंबर नाम दे सकता है इंस्टेड ऑफ गिविंग द नंबर्स. राइट, सो आई वांट द डेटा. फाइंड द डेटा, metric data of food delivery apps, and find all the key metric data of like drop off, um, like conversion rates. Actually कुछ नहीं बोलता हूँ ताकि I have an open-ended result and then I can refine it. It's an agent that does research for you. It can do research on research papers, and it can of course do research on other. Okay, DoorDash has what 65% market share. App downloads. ये कुछ किल हो गया बीच में. नहीं, मुझे ये इस टाइप के नंबर्स दे रहा है, ये मुझे चाहिए नहीं. सो इसको मैं चेंज कर देता हूँ. फूड डिलीवरी एप्स. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जोमेटो को ले लेता हूँ. जोमेटो बिकॉज पब्लिक कंपनी है, शायद कुछ डेटा मिल जाए. फाइंड फाइंड भी नहीं. रिसर्च द app metrics of Zomato, like number of orders per day, conversion
rates, uh, average ticket value, etc. ये कुछ कुछ इमेजेस मिल गई जो कि रेलेवेंट लग रही हैं. जोमेटो रिपोर्टेड ये ना क्लिप हो रहा है, पता नहीं क्यों. ये टिपिकली होता नहीं है क्लिप इस तरह से. It gives you proper results. I don't know what's happening right now. बट ठीक है. 2,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है दिसंबर 2022 में, 75% फ्रॉम द प्रीवियस फिस्कल ईयर. ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ चुकी है 58.5 बिलियन इंडियन रुपीज, विच इज मॉडेस्ट 2% इंक्रीज इन द प्रोसीडिंग क्वार्टर. 647 मिलियन ऑर्डर्स, 21% हाइक. और ये मुझे कुछ इमेजेस भी मिलती है. ये रहा इमेज. ये ऑस्ट्रेलिया का नंबर है क्या? ये ऑस्ट्रेलिया का नंबर है. तो ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं? पुराना डेटा होगा फिर, ये नया डेटा नहीं है. ठीक है, कुछ और काम की चीज. हाँ, तो यहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि इन सब में बेसिकली ये टवीली, अगर ये अभी ब्रेक नहीं हो रहा होता, इट वुड हैव गिवन यू फुल रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट, जो कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते थे इनटू अ चैट, सो दैट इट इट कैन गिव यू बेटर रिजल्ट्स. लेकिन ये नहीं काम कर रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. वी विल जंप टू परप्लेक्सिटी. ओके, ये फ्री टूल है. इसमें आई शो यू बंच ऑफ थिंग्स. ये मेरा सर्च हिस्ट्री नहीं है, ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है भाई. जस्ट FYI, I'm not searching for NASA or anything. Okay, so uh, find me uh, Zomato's app metrics and its specific numbers. Um Look at comprehensive set of metrics that a product manager will care about. मैं तो कॉपी कर ले रहा हूँ. I'll show you why. अब पहला जो सर्च हो रहा है, ये सर्च हो रहा होगा अक्रॉस इंटरनेट. अब कुछ मिल गया नंबर. ऐप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मिल रहे हैं, यूजर एंगेजमेंट के मैट्रिक मिल रहे हैं, बिजनेस मैट्रिक मिल रहे हैं. काम का मिला कुछ. करेक्ट. और ये अक्रॉस इंटरनेट मिला है मुझे. करेक्ट. आई कैन ऑल्सो लुक इनटू सम अदर थिंग्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन वगैरह वगैरह. ये अक्रॉस इंटरनेट मिल गया है. नाउ आई कैन जंप इनटू ईच ऑफ दीज रेफरेंसेस दैट दे हैव गिवन. There are 5 references that I have, and I can go into each one of them if I'm a PM, and I can collect this data. अगर मुझे करना हुआ तो मैं क्या करता, मैं पांचों में जाता, कॉपी करता एंड नोशन में डाल देता, कॉपी करता, नोशन में डाल देता, क्वेश्चन कॉपी करता, नोशन में डाल देता, बस और कुछ नहीं करता. ठीक है. बिकॉज लाइक आई सेड, मैं जल्दीबाजी में हूँ, राइट. आई विल आई विल स्टार्ट अनदर क्वेरी, but this time I'm going to change the focus from here to video, because a lot of people nowadays talk about these numbers in their YouTube videos. So now I'm going to find the same data from their YouTube videos. ये मिल गया मुझे मंथली एक्टिव यूजर्स, डेली एक्टिव यूजर्स, कन्वर्जन रेट. लंच कन्वर्जन रेट इज लो एट ओनली 2%. ठीक है. यूजर अटेंशन क्या है, पुश नोटिफिकेशन क्या है, ऐप स्टोर रेटिंग्स क्या है. ठीक है. फाइन, फेयर इनफ. नेक्स्ट I'll do one more search and I'll jump into Reddit. And I have some more numbers, and fairly detailed numbers. Correct. And I have some more data also, so मैं इसको copy कर रहा हूँ यहाँ से. And I will go out to, कहाँ गया Notion. So I can go back to the original page. And यहाँ पे page and ठीक है, ये आ गए results. Now what I can do is I can again go back to the original page
go back to the bottom, and I can say space, create a short presentation. अरे मेरा 4O वाला तो डाला नहीं ना मैंने, अच्छा चैट जीपीटी, सॉरी. परफेक्ट. अब मेरे पास आ गया है, डेटा भी आ गया मेरे पास, प्रायोरिटाइजेशन भी आ चुकी है. अब मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू से, सॉरी ये नहीं, हाँ, मेक अ शॉर्ट presentation to share, sorry, to share with my boss. Use the prioritization data from ChatGPT 4O. इसने ढंग से काम नहीं किया है. ओके, लेट मी डू वन थिंग. यहाँ पे इट डिडंट डू, सो ये थोड़ा सा इशू है नोशन एआई के साथ में कि वो थोड़ा सा कभी कभी मूडी हो जाता है. सेकंड, आई विल जस्ट गो हियर, आई विल मेक अ न्यू पेज, presentation. Okay. Create a short presentation on optimizing post checkout experience of Zomato. I need to share with my boss. Keep it quantitative and objective, like how a senior product manager would do. अरे यार ये तो मुझे ज्ञान दे रहा है. ठीक है, so it is not giving me the results, maybe because I'm not paying for it, that is why. कोई बात नहीं. What I'm going to do is, एक second, हाँ, what I'm going to do is, now मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है. अब मैं चैट जीपीटी को जाकर बोल सकता हूँ मुझे प्रेजेंटेशन बना के दो. दैट्स वन ऑप्शन फॉर मी. और आई कैन ऑल्सो यूज समथिंग कॉल्ड मीरो. ठीक है, अभी आई एम थोड़ा रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई जस्ट शो यू हाउ यू कैन डू इट इन मीरो. और आई ऑल्सो शो यू दिस. This is Claude. This is Claude 3.5, which can do some fantastic work. Uh, yeah, okay. So यहाँ पे let me just copy paste some of this information, optimizing ये है. ठीक है, और इसको मुझे शेयर करना है. So I'll just see if I can. Sorry, मैं ये जो प्रोड्यूस किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज ये सभी सिर्फ कचरा है. यस, ओके. इसको पूरे को मैंने कॉपी कर लिया है, एंड आई एम गोइंग बैक टू क्लॉड.
आई नीड टू चेक वेदर ये सब कुछ पेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है क्या? हुआ तो है लेकिन नीचे का डेटा नहीं आया है, सो आई विल हैव टू गो बैक टू आई हैव टू गो बैक टू नोशन. I will I'll only pick the chat GPT 4o का response. या इसका response लिया, क्लाउड में गए, इसको बंद करो. I will paste this guy. I'll go back and I will also paste the Zomato का data. Yes. ठीक है, ये हो गया सब कुछ. Create a short presentation. Okay, you're an expert product manager with expertise in food delivery apps. Create a short presentation in Markdown. चलो ठीक है, in Markdown format to on optimizing post checkout. Post checkout क्या चीज? On optimizing post checkout food delivery experience. ओके, रोड मैप भी दे दिया, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट भी दे दिया, कंक्लूजन भी दे दिया. करेक्ट. So this is what you can do with Claude, and this is how you can quickly, like अभी हमने, because I was explaining a lot of things to you. This if I was doing it 15-20 मिनट में ये पूरा निपट गया होता. एंड अगर डेटा होता तो इवन बेटर रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास में. ठीक है. But I'll show you one more thing before we go, which is this guy. So Miro is something that I use from time to time for presentation or for mind mapping and similar, thinking process and so on. Miro also has an AI. This, for example, is a डिजाइन स्प्रिंट का मेरे पास एक मैप है कि आप डिजाइन स्प्रिंट कैसे रन कर सकते हो ओवर 5 days. ठीक है. So you can see this. There's a design sprint, there's a map, there's a sketch, there's a decide, there's a participate, there's test. तो ये आपका टिपिकल डिजाइन स्प्रिंट का एक सीक्वेंस है. ठीक है. अब मुझे इसके ऊपर मान लो प्रेजेंटेशन बनानी है. करेक्ट. आई वांट टू मेक अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन एज एन इंट्रोडक्शन टू डिजाइन स्प्रिंट. हाउ विल आई डू इट? I can create it or I can simply say मैंने यहाँ से presentation actually already pick कर लिया है, right? So I can say something like create an introduction short presentation for design sprint. Cool. So इसने इसी में से pick किया. Let me just close this guy. Design sprint introduction. What is a design sprint? Key benefits of design sprint, the design sprint process, and the next steps. तो अगर इंट्रोडक्शन है तो ये सफिशिएंट है, राइट. और मैंने एक और इससे पहले एक और टेस्ट किया था, की लर्निंग्स एंड नेक्स्ट स्टेप्स, कि अगर मुझे लास्ट में टेक अवेज देना है वंस द एंटायर डिजाइन स्प्रिंट इज डन, तो क्या दे सकते हैं, ये देखो. What we accomplished: explored inspiring products and experiences, conducted lightning demos, interviewed customers, blah blah blah. The design sprint process recap है, key takeaways and next steps.
Cool. इस तरह की प्रेजेंटेशंस किसी और प्लेटफॉर्म पे बनना आज की डेट में नहीं हो रहा है. You'll get text at a lot of places, but you'll not get this quality presentations. ठीक है. There are few more platforms like Google Slides, of course, has introduced something like this. I think PPT is also doing something like this, right? But visual, completely visual तरीके से बनाने में, there are two more platforms which I like. One is called Gamma, Gamma, Gamma. Uh, this guy, Gamma.app, and there's another called Tome something, Tome. Yeah, this guy. So Tome.app and Gamma.app. So to summarize all the stuff that we have just discussed, we started with a vague idea. We did some research. पहले हमने उसको डंप किया into second brain, right? हमने Notion use किया for our second braining activity, and we discovered that Notion does a fantastic job at extending whatever we are writing. एक वो extend कर पा रहा था, समझ पा रहा था, and was able to be a nice little assistant to us. लेकिन हमने उसके ऊपर काम नहीं छोड़ा, हमने खुद ही सोचा कि हमें क्या करना है. करेक्ट. और ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी उसी ने दिए थे वैसे, बाय द वे, इफ यू रिमेंबर. करेक्ट. देन हमने ये सब डेटा लेकर वी वेंट टू चैट जीपीटी 3.5, वी वेंट टू चैट जीपीटी 4o, एंड वी ऑल्सो एंड वी डिड द प्रायोरिटाइजेशन, जिसमें यू फिगर्ड और यू लर्न हाउ टू क्रिएट गुड प्रॉम्प्ट्स. राइट. एक बार सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, यू हैव टू रीप्रायोरिटाइज एंड सो ऑन. आई एक्सप्लेन द रीजनिंग व्हाई दैट हैपेंस एज वेल. राइट. सो वी गॉट द चैट जीपीटी 4o के प्रायोरिटाइजेशन व्हिच इज फेयरली गुड. उसको यूज करके देन वी वेंट टू टवीली. टवीली से रिसर्च करने की कोशिश की. द रिजल्ट्स वेर नॉट दैट गुड टुडे. तो हमने परप्लेक्सिटी भी गए और परप्लेक्सिटी में 3 तरह की क्वेरीज रन की, एंड वी डिस्कवर्ड दैट रेडिट की क्वेरीज थोड़े से अच्छी आ रही थी. करेक्ट. परप्लेक्सिटी वाज दिस गाय. राइट. तो इसकी मेट्रिक हमने उठाई. ऑफ कोर्स इफ आई वाज डूइंग दिस आई वुड हैव डबल डबल चेक्ड ऑल ऑफ दीज नंबर्स. राइट. ये जो नंबर्स जहां जिसको मैं वेरीफाई करता कि सही भी सोच सके नहीं. ठीक है. तो हमने नंबर्स लिए, ये सब मिला के सब कुछ ऐड वैड करके देन वी वेंट टू क्लॉड. आई कुड हैव गॉन टू चैट जीपीटी आल्सो, बट आई वांटेड टू शो यू अ डिफरेंट टूल. आई वेंट टू क्लॉड, एंड क्लॉड में मैंने ये सब नंबर्स, ये सब डेटा डालने के बाद आई आस्क्ड इट टू गिव मी अ समरी ऑफ दिस एंटायर प्रेजेंटेशन, मेक अ प्रेजेंटेशन, and gave you a decent presentation with explanation. Of course, I would have liked it to show me RISE framework in a table and stuff. वो सब इसने नहीं किया. So Claude is very particular about instructions. उसको बहुत specific instructions चाहिए होते हैं, but वो results भी बहुत अच्छे देता है. ठीक है. So yeah, Claude requires much more detailed. It doesn't assume for you. It will expect you to give exactly the instructions for it to give you results. नहीं तो देगा नहीं. तो मैंने दिया नहीं थे, इसने दिया नहीं. Yeah. And once you have this, I mean, I am out of time. Otherwise, I would have picked this up. I would have gone to Miro, and I would have converted Miro, Gamma, and Tom, and I would have shown you how this bunch of text becomes a beautiful new presentation on the fly. Yeah. Let me just see if I can show you that for a second. Yeah, okay. I can do that. Yes. Okay. Oh, 1 second. Yeah. Share रुक गया. रुक जाइए. हाँ. You can see the screen. क्या ये गामा है. गामा के अंदर आप आओगे तो ये ऑप्शन देता है क्रिएट इन विथ एआई, जिसमें पेस्ट इन टेक्स्ट मैंने ले आया. एंड पेस्ट इन टेक्स्ट के अंदर में आई जस्ट गो टू क्लॉड, and I'm going to copy whatever this guy has given me, just this, and go back to Gamma, paste this guy. Now, what do I want? Presentation, website, or document? Presentation for the time being. So, give me a presentation. ठीक है. अब मैं कर सकता हूँ कि टेक्स्ट कंटेंट को एग्जैक्टली जैसा है वैसे ही करो, या कंडेंस करना है, या फिर जनरेट करना है.
दोनों जनरेट कर लो, जो ये दिया है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हो इफ यू नीड। ऊपर में फ्री फॉर्म एंड कार्ड बाय कार्ड का ऑप्शन है, आई गो टू कार्ड बाय कार्ड एंड आई विल हैव टू गिव इट, सो ये आप देख सकते हो कि मैं डैश 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 करता हूं तो ये कार्ड्स बनते जा रहे हैं, राइट? आई विल रिमूव ऑल ऑफ दिस फॉर द टाइम बिंग एंड लेट्स जस्ट से कि ये फ्री फॉर्म है, मैंने फ्री फॉर्म टेक्स्ट दे दिया है एंड आई वांट एआई टू फिगर आउट थिंग्स एंड बोला अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पर कार्ड शुड बी डिटेल्ड, जितना डालना डाल दो। ओके, यस, राइट फोर, मतलब ऑडियंस कौन सी है, टोन क्या है, प्रोफेशनल, इंफॉर्मेटिव एंड डेटा ड्रिवन, यस। एंड इमेजेस के लिए I'll say please use web image searches or AI images. I can use either of them. I'll say AI images. Um, let's say uh, immersive food, uh, realistic. ठीक है, फॉर्मेट क्या है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, और कार्ड की हाइट क्या है, फ्लूइड। आई कैन कीप इट स्टैंडर्ड ऑल्सो बिकॉज मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं इसको स्टैंडर्ड कर देता हूँ। ठीक है, कार्ड विद स्टैंडर्ड या ठीक है। एंड कंटिन्यू के लिए 40 की बात कर रहा है, 40। अच्छा, ये इसने थोड़ा पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया है। मेरे पास 500 क्रेडिट्स हैं, सो जस्ट रन इट। आई हैव हाउ मेनी, 8। मैं इसको बोलता हूँ 10 कार्ड्स बना के दे। ठीक है, मुझे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, सो कंटिन्यू। आई कैन पिक अ थीम, दिस looks like a non-appetizing theme, so I'll pick something. ओके, चलो ये ले लेते हैं। तो जोमेटो के लिए कर रहे हैं ना, तो जोमेटो के लिए लाल लाल काला पीला कुछ होना चाहिए। कहाँ गया, ये तो होगा रेड, ये रहा, ये ले लेते हैं। चलो जनरेट करो। बिकॉज मैंने जनरेटिव बोला था, जनरेटेड बोला था, इसी कारण इट इज जनरेटिंग द कंटेंट फॉर मी। Without even completing all of this, you can easily see कि the quality of the presentation is fairly good, right? Something that you can pass on, and you can imagine कि once you have done this entire workflow from an idea to refining the idea, to generating some items, to adding some data to it, to then making presentation, and then finally making a present like a good quality visible इस तरह की actual presentation. You can practically do this in half an hour, which would have taken many hours or more. अगर आपको डेटा क्रंचिंग भी करनी है, आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर डेटा क्रंचिंग करनी है तो आप गूगल शीट पे कर सकते हो। गूगल शीट पे आप
There are a bunch of extensions available that you can add, and then you can do basic data crunching वहाँ पे. इसके अलावा there are few other tools which are enabling data analysts and BAs to do this, to do the same work. अभी तक generate ही कर रहा है ये, but it's a presentation that I can potentially share. आठ बना चुका है, मुझे एक्चुअली 5 ही करना चाहिए था. I asked it to make 10 presentations, 10 So slides. this is also free, right? This is not free. मतलब Oh, थोड़ा free है. It's a premium thing. It's not completely paid. So you can use it. I think you can use the non-AI thing for free for much longer with AI, but it is relatively very affordable. Yeah, मतलब for the time that it is saving me, saving any one of you. $10 $20 बेचारा मांग रहा है ना. Okay, I think it's almost done. अच्छा ये implementation timeline डाल रहा है बेचारा कर रहा है मेहनत. Hmm. Okay, let's go to the very top. Oh, look at this photo. This photo is actually pretty good. उंगलियां भी 1 2 3 4 हाँ 5 उंगलियां हैं. 1 2 3 4 5. करेक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग. Very interesting. They have done something very nice. This is very complicated, by the way. What you're seeing right now is a very difficult technical thing. क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, आपको एक लेआउट फिगर आउट करना है, ऑन द फ्लाई लेआउट फिगर आउट करना है, इमेजेस जनरेट करनी है. It's not easy. I don't know how they're affording it, but this is not at all easy. Very expensive, technically very expensive and expensive to run as well. Okay, now यहीं से I can also run a presentation. Plus you can also edit, by the way. यहाँ पे पूरे editing features हैं, so you can also edit every single thing that you're seeing is completely editable. I think generate कर रहा है, इसी का थोड़ा अटका हुआ है. बट आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, एंड बेस्ट पार्ट कि आपने जो थीम बनाई है, आप थीम को चेंज कर सकते हो यहीं से. So which is why I like this tool, because a lot of these tools typically once you have picked up the theme and once you have decided those things, then आप चेंज नहीं कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे everything is, you have complete flexibility end to end. Pretty awesome. ये बेचारा अभी लास्ट की स्लाइड बना रहा है. ठीक है. ओके डन. चलो प्रेजेंट करते हैं अभी. एंड देयर यू हैव इट. या this 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 built in front of you in few minutes, end to end. यहाँ पे हमारी सभा समाप्त होती है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मोर देन हैप्पी टू टेक देम. नंबर्स पे हम लोग ज्यादा घुस नहीं पाए अभी. नंबर क्रंचिंग कैसे कर सकते हैं, डेटा कैसे कर सकते हैं, वी कुडंट डू दैट, बट आई होप दिस एंटायर थिंग वाज यूजफुल. Hey Tarvinder, how do you decide between where to use ChatGPT, where to use Claude? Like they are basically pretty similar, right? So what's Yeah. your yeah? So they are similar, but they have very different capabilities. So Claude, first of all, Claude is way more intelligent than ChatGPT by a margin. Okay. So if I have to generate code or if I have to do anything technical, I will typically use Claude for it. Claude is hallucinates less, gives me more accurate results, captures or considers a broader set of possibilities and ideas before giving me an answer. ChatGPT is too eager, which I showed you, right?
ChatGPT is too eager to give you results, especially ChatGPT 4o, and ChatGPT 4 hallucinates hard. अगर आप बहुत थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछोगे, ऐसा कुछ पूछोगे, तो वो बहुत गंदा hallucinate करता है. Yesterday I asked a question about some technical thing which I wanted to clarify, and it made up a package. Python का उसने पैकेज एग्जिस्ट नहीं करता है, उसने मेड अप कर दिया, राइट? लेकिन इस तरह की चीजें क्लॉड नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है. And where would Copilot fit in like this matrix? अरे को पायलट का तो बहुत ही सही यूटिलाइजेशन बताता हूँ मैं, मतलब इन ऑल ऑफ दिस ना, बहुत सही चीज दिखाता हूँ आपको. लेट मी फाइंड सम डॉक्यूमेंटेशन, सम बोरिंग डॉक्यूमेंटेशन. कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट पता है आपको? एनी गवर्नमेंट वेबसाइट दैट कम्स टू योर माइंड? MCA. वो गाली लग रही है मेरे को. एमसीए, ओके. एमसीए क्या है? गवर्नमेंट एमसीए gov.in. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना? ओके, परफेक्ट. ठीक है. ओके, गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू कोपायलट को मैं कहाँ यूज करता हूँ. So Copilot does a decent job. It's not very smart, unfortunately, but उसका एक दो यूटिलाइजेशन, बहुत एक दो जगह पे बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है. सो या मैं एमसीए पे हूँ, एंड यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है विच मोस्ट ऑफ अस टिपिकली डू नॉट नो वेयर टू गो फॉर, बिकॉज इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर और वो सब तो इनको पता ही नहीं है, राइट? सो व्हाट आई एंड अप डूइंग इज, आपको मैं एज यूज करता हूँ. बाय द वे, आई कंप्लीटली मूव फ्रॉम क्रोम एंड ऑल द अदर ब्राउजर्स. एज काम करता है बिकॉज एज वन इज लाइट ऑन माई, थोड़े से बुढ़ी हो चुकी है मेरी मैकबुक प्रो. सो एज परफॉर्म्स वेरी वेल compared to all the other browsers, number one, and number two, it has Copilot baked in. So what I can do now is notice something, using relevant sources, or I can say using this page, or I can say using this site. So it basically performs better for me than the search that they have. अब मुझे क्वेश्चन बताओ यहाँ पे, कपिल, यू गेव मी एमसीए, सो तुम्हें बता दो. We can find the details of any company. कोई भी श्योर, company. लेकिन कुछ प्रोसेस बता दो, कुछ और बता दो जो मैं सर्च करूं. Okay, give me so the details of the company will be behind some password वगैरह, right? The Okay. names can be pulled up without password. अच्छा. Okay, what can I do on this site? Or maybe give me a step-by-step process from this site on how to register for GST as a organization. Great question. Hmm. Right. अभी मुझे बता दो कि क्या कर सकते हैं. नेम रिजर्वेशन कर सकते हो, DIR3 KYC कर सकते हो, ट्रैक ट्रांजैक्शन स्टेटस कर सकते हो, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो, व्यू कंपनी LLP मास्टर डेटा जो तुम बोल रहे थे शायद, DSC कर सकते हो, इंक्वायर फी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन, ई ऑक्शन, सेव डेट. वेरी नाइस, राइट? अब तुमने बोला गिव मी स्टेप बाय स्टेप Process process to register for GST as a organization. Of- okay, access the GST portal. Click on register now, fill in the required details, temporary reference number, complete part B, verification, and you're done. और इसने बाकी कुछ और डेटा पॉइंट्स को भी सर्च किया है Hmm. to find this answer, right? So using this, but wherever needed, it will pick up other information. लेकिन पिछले क्वेश्चन में, because मैंने यही पूछा कि इस साइड में क्या हो सकता है, it picked up majority, all the references were here except the last one, which came from maybe some third party, some other tool, some other site. So Copilot का मेरा यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा यहीं पे होता है. And Gemini can't do this, right? Sorry, Gemini can't do this. Gemini का बहुत ज्यादा सेंसर्ड है. The problem is that सेंसर्ड मतलब कि कुछ भी आप थोड़ा टेढ़ा पूछोगे, सॉरी ये तो हम लोग नहीं कर सकते, टाटा बाय बाय. That would have happened ever since the image generation fiasco. हाँ They're नहीं, careful about जनरली everything. Google has become very risk averse. No, Google was the one which used to
गूगल का पूरा वो बदल चुका है, लाइक द एंटायर DNA has changed. Google was the product which will do crazy things and break things and everything. अब गूगल को भी मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। और सो अब मुझे अगर यहाँ पूछना है ना कि ओके mca.gov.in, आई डोंट नो ये रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। गिव मी स्टेप बाय स्टेप, नहीं क्या था, व्हाट कैन दिस साइट डू। समरी बनाती है। मतलब you see the difference, right? So Copilot is actually doing a fantastic job because इसमें सिर्फ मैं पूरी वेबसाइट के सर्च की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी लेट्स से MCA सर्विसेज, DSC सर्विस, राइट, या LLP ई फाइलिंग है। ओके, मैं बोलता हूँ LLP ई फाइलिंग में लिख देता हूँ कि अब मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसी पेज से सर्च करो, ठीक है। विच फॉर्म शुड आई यूज फॉर माई एनुअल फाइलिंग। फॉर्म 11, बढ़िया। Very interesting. We can use this, try this for ITR filing this season. करेक्ट। सो आप किसी भी पेज पे हो ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है, या फिर आपको जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, राइट, जैसे देर आर वेरी हैवी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लेट्स से मुझे किसी कोई डॉक्यूमेंटेशन याद आ रहा है किसी प्रोडक्ट का, अरे किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का कोई डॉक्यूमेंटेशन पता है किसी को? ओके, HDFC क्रेडिट कार्ड Most important terms and conditions, something like that. टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, कहीं तो होगा, ये रहा। बहुत बढ़िया, ये तो खैर PDF में है तो ठीक है, देखते हैं। सॉरी, अब ये देखो, अवेयर है कि भाई बदल चुकी, पेज बदल गया है, सब बदल गया है, करेक्ट। सब मैं इस पे चले जाता हूँ, बोलता हूँ हाउ मच विल इट चार्ज मी, हाउ मच विल कॉस्ट मी टू यूज दिस कार्ड if I only plan to spend 10K per month. तो एनुअल एंड रिन्यूअल फीस है, कैश एडवांस फीस है 2.5%, फाइनेंस चार्जेस है एंड लेट पेमेंट चार्जेस है, ठीक है। तो बोल रहा है एनुअल एंड रिन्यूअल फीस जो है वेरी एंड विल बी कम्युनिकेटेड टाइम ऑफ अप्लाइंग द क्रेडिट कार्ड, तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो नीचे लिखा व्हाट आर द रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड, हाउ कैन आई रिडीम माई रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड इज देयर अ ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट्स। Ravinder, can it also calculate things for us? For example, based on these terms and conditions, if I ask him, let's suppose, give me a estimated cost, estimated interest I'll pay to the card company if I take out or withdraw 5,000 rupees every month from ATM using my credit card. Okay, We if can I देख लेते हैं, if I withdraw 5,000 rupees from my credit card every month every using month, how much will it and go how on? much will it charge me as an interest? Cost, how much will it charge me, and what will be my final amount? So it's doing the calculation. Correct.
ठीक है, अभी कितना कितना अच्छे से करता है, दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू जज एंड यू हैव टू चेक बाय योरसेल्फ. बट को पायलट का पोजीशन मेरे मेरे दिमाग में तो यही है. दिस इज व्हाट इज वेरी यूनिक फॉर मी. बाकी in terms of Baki responses and everything, it doesn't do a very good job compared to ChatGPT and Claude, so I don't use it for that purpose. But this is one thing that Copilot does fairly well for me to find information from dense documents or dense pages or dense websites. बहुत सारे documentations, especially when I'm coding or doing something similar, the documentations are so dense that I find using Copilot to find the relevant information for me much faster. This is a very interesting use case. Thanks for sharing. So this is your Copilot. Gemini मैं बहुत ही कम use करता हूँ because it's very heavily censored, so it just gets very irritating and very frustrating. And as you can see, the results are also pretty abysmal, right? So कोई logic मतलब कोई reason नहीं मेरे पास use करने का as of now, unless maybe see if I was using like if I was on Google Workspace or something, maybe I will have an incentive कि चलो use कर लेते हैं. But अभी कोई incentive है नहीं. So yeah, Claude for coding. The best by far. Actually for text also it is good, but text में तुम्हें बहुत ज़्यादा detailed instructions देने पड़ जाते हैं. ChatGPT थोड़ा जल्दी. So what I end up doing is मैं ChatGPT से general quickly I come up with ideas, I'll brainstorm and everything. I'll put those ideas together and then I will go to अपना Claude and बोलो ये सारी चीजें भाई अब तुम मुझे ये बना के दो. But yeah, typically coding is entirely happening on Claude, while all the text related work is happening on ChatGPT for me. And searching is happening via Perplexity, this guy. Perplexity से search करता हूँ मैं. Google तो मेरा use होना बंद ही हो गया almost. I'm actually completely out of, like मेरा Gmail चल रहा है and Google is only my authentication provider, nothing else at the moment. And I use this guy, Tavili, from time to time for generating research reports, especially when I need to get into like research papers. So that's my stack. इसके अलावा समथिंग कॉल्ड जीपीटी एक्सेल जिससे आप फॉर्मूलाज वगैरह निकाल सकते हो. एंड स्प्रेडशीट में, गूगल स्प्रेडशीट में यू कैन ऐड एन एक्सटेंशन. दिस इज व्हाट आई वन दैट आई एम यूजिंग एट द मोमेंट व्हिच इज कॉल्ड जीपीटी फॉर डॉक्स, शीट्स एंड स्लाइड्स. और इसके थ्रू आप बेसिक सिंपल फॉर्मूलाज कर सकते हो. ये गड़बड़ इसलिए हुई है, इसमें जो एरर्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ये ऐसा, एक सेकेंड, आई नीड टू डिलीट दिस गाय. डिलीट कॉलम. हाँ, सो ये कुछ नंबर्स गलत हैं यहाँ पे. बट आई कैन नाउ use the function GPT and I can do GPT web also, for example. And I can say, you know, come up with a campaign idea, comma, and value and the temperature and everything else. I think those are optional, so I can, yeah, those are optional. Sorry, those are mandatory, so इसी can वो आया नहीं. But यहाँ पे आप डायरेक्टली GPT यूज कर सकते हो. ठीक है, आपको API की लगेगी लेकिन यू कैन नॉट डू इट जस्ट लाइक दैट. या सो आई मीन सी सबके वर्कफ्लोज अलग अलग होते हैं एंड सबके अपने यूज केसेस हैं आप लोग सबके. दिस आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर मोस्ट कॉमन फॉर मी एंड आई यूज इट वेरी ऑफन, almost on a daily basis, and this is how I modified my workflow. I also use Obsidian a lot, but I didn't show you that too much because Notion चल रहा है, तो Notion का experience and Obsidian का experience similar है. ठीक है? Any questions? Hey, Talil, I have a question. So let's say I have a lot of text-based dirty data. Let's say I'm collecting feedback within the app, which is a free field text input field. Okay. People are writing in English, they're writing in English as well. Yeah. Now I have to go through that data. It's a tedious task for me. Now, can GPT help me out categorize that data into a meaningful category of insights? Yeah. And the data is not structured and how much data are we talking about? So let's say it's running into thousands of rows or hundreds of rows. Hundreds of rows. Yeah. If it's hundreds of, so if it's less than 100, I will suggest कि उसको उठा के ChatGPT में डाल दो और बोलो कि काम करके दो.
ठीक है, फिर क्लाउड को दे दो, बिकॉज अगेन दिस इज थोड़ा सा टेक्निकल, what should be done behind the scene. So क्लाउड को दे दोगे, क्लाउड will give you decent results. ठीक है, but a smarter and a more accurate way of doing this is to pick up maybe the top 10, top 20 rows, go to Claude, say that this is my data, this is the result that I'm looking for, generate a Python script for this, and then run Python on your local machine and get the results. The results will be far better, plus of course scalable, because data आता रहेगा, चलता रहेगा. If this data is on your website and you're downloading it to your local machine and that's how you're operating it, then you can also do one more thing, which is if I was you, what I'll do is I will create a bash script. Bash script is something that you can run on a local machine. And that bash script will run every, let's say, 2 hours, 3 hours, or 6 hours, or 8 hours, whatever you want. अगर तुमने cron job लगा रखी है, cron job is basically a scheduler on your website, which will every night, let's say 1 a.m., it downloads the latest, like whatever is the new delta of people that you have given feedback. ठीक है, वो cron job चलेगी, आपका डेटा डाउनलोड करेगी, आपके लोकल मशीन पे आ जाएगा. ठीक है, आपने cron job सेट कर रखा है, लोकल मशीन पे आपने बैश सेटअप कर दिया, विच विल मॉनिटर कि क्या कोई नई फाइल आई है मेरे पास. ठीक है, क्या कोई नई फाइल आई है? अगर नई फाइल आई है तो ये पाइथन स्क्रिप्ट रन करो. Python script run हो गई, and that Python script will not just look at the new file, but look at the entire file, all the files put together, so that it can give you a cumulative way, number ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. ठीक है, एक वो कर सकता है. दूसरा, अगर आपका पर डे का डेटा इनफ है, लाइक इट्स हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स एवरी डे, देन वो पर डे का डेटा को भी एनालाइज करके दे सकता है, एंड यू हैव अ कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम. Fair enough. Hello. Yes. Hi. Hi. So let's suppose I have a data set of 1,000. So once I'm using ChatGPT for Python script, first shall I identify which algorithm should be identified, and then I should ask for the Python script, or straight away I should ask for the Python script basis whatever data set I have? आप दोनों चीजें कर सकते हो. You can give the data set a sample of the data set and then suggest कि this is what I'm looking, this is the input, this is the output I'm looking for, what are the suggested algorithms or what are the suggested techniques that I can use for for getting my output. ठीक है, and you can also describe कि भाई मुझे production पे नहीं चाहिए, like I'm not looking to make this into a production software that a lot of people are going to use, etc. ये मैं अपने local machine के लिए चलाने के लिए काम कर रहा हूँ. So something quick and easy and dirty is also okay for me, for instance. Or I'm going to make this for my production purposes. So give me something that is scalable, modular, blah blah blah. Got it. Okay. Right. So पहले वो And algorithm does it also give the code Yeah, of course it gives you the code behind the output that it is giving? Yeah. So यहाँ पे मैं output की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कोड ही लेने की बात कर रहा हूँ. कोड लो. Okay. ठीक है, आप कोड जनरेट करो, कोड जनरेट करके फिर उसको यूज करो. I guess I think all of you will be very interested in seeing how I do code, like how do I coding using this. और या फिर इस तरह के जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उसमें how do I use Python script on a day-to-day basis. Yes, and how do we also train the data? Training the data तो भैया अलग काम हो गया. Training, because we use the word or we use the phrase training very loosely. Training is actually a very expensive thing. Okay. जो अभी दिख रहा था ना, जो को पायलट कर रहा है वो ट्रेन नहीं कर रहा है. Yes. वो ट्रेन नहीं कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, वो रैग कर रहा है, which is retrieval augmented generation. It is using context clues. That is using, basically it is downloading the HTML which is already loaded on the page. It is downloading it, उसको एक इंडेक्स कर रहा है. आई थिंक मोस्टली वो क्रोमा डीबी यूज कर रहा है. वो इंडेक्स कर रहा है, इंडेक्स करके उसको चंकिंग करके इंडेक्स कर रहा है, और उसके बाद फिर जब वो क्वेरी रन होती है, जो आपने क्वेरी रन की थी, क्वेरी रन होती है, वो उसी डेटाबेस को प्रायोरिटाइज कर रहा है कि इसमें से डेटा निकालो और इनको फिर समराइज कर दो. इसका एक पूरा ये रैग बोलते हैं इसको, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन.
RAG is the one class of AI, generative AI application which is growing very very fast. And सबसे ज़्यादा research, okay, सबसे ज़्यादा research नहीं बोलूँगा, लेकिन that's the class of applications that most companies are utilizing or building. So वो that is विशाल, that is what you can do. लेकिन अगर आपको train करना है, then आपको fine tuning कर सकते हो. लेकिन fine tuning again is a decent amount of effort. So your use case has to justify it. Yeah. So basically, my use case was I had data of 1,000 patient, and wherein I had all their health preferences in terms of daily diet क्या consume करते हैं, how many steps they walk, Yeah. what current diseases they are suffering from, and basis that I wanted some output. So Basis that you want to suggest them कि तुम कैसे जिंदा रह सकते हो और हाँ, मतलब डेली आपको क्या टास्क फॉलो करना है in terms of diet, in terms of you fitness. don't need to train, no? Why do you need to train that? Train anything? Train करने की जरूरत ही नहीं है. See, what you would want to provide is a medically accurate plan Yes. which is personalized. Correct? That is what Yes. you're looking for. Correct? अभी आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हैं, then yes, please train करो. पैसे plus talent है. दोनों चाहिए, because training and fine tuning as well as training is an expensive affair, plus little more technically tricky. But at the bare minimum, what you can do is you can create a template of sorts कि भाई मेरे को a good training plan or not training plan, a good recommendation treatment plan looks like this. फर्स्ट पैरा ये होना चाहिए, सेकंड पैरा ये होना चाहिए, थर्ड पैरा ये होना चाहिए, फोर्थ पैरा ये होना चाहिए, इसके अंदर ये डेटा आना चाहिए, वगैरह वगैरह. You can create a broad template of what you are suggesting, right? And then for each of these sections, you can run Python scripts, or you can create Python scripts, or whatever script that you're making. You can create those scripts which will pull the data from the relevant sources, pull the data from research papers or your knowledge base, which could be verified by doctors in your, if you have doctors, or simply medically accurate research papers. You can pull the data from there and combine these two to then make a recommendation कि भाई तुम क्या कर सकते हो. अब जितना इसके अंदर आप घुसोगे डिटेल में, कि for example, if I'm sitting in Gurgaon versus I'm sitting in Pune versus I'm sitting in Allahabad, right? The facilities available, the kind of food I should be eating, or the kind of lifestyle that I have, उसमें बहुत फर्क आ जाएगा, and that can impact the treatment plan that you're recommending me. Got it. This was useful. Thank you. ये एक्चुअली इस टाइप का प्रोडक्ट मैंने बनाया है रिसेंटली. आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक आई बिल्ड, नॉट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट आई बिल्ड समथिंग व्हिच वाज अराउंड मेडिकली एक्यूरेट डेटा. उसके ऊपर कुछ बनाया था रिसेंटली. एंड जो आई थिंक वन ऑफ यू वर आस्किंग, राइट, कि इनपुट और आउटपुट का जो इशू था, पुलकित यू वर आस्किंग, राइट, कि मेरे को आउटपुट पता है, मेरे पास इनपुट डेटा है, अब मैं एल्गोरिथम कैसे निकालूं. करेक्ट? So I was recently solving one problem like this, जिसमें मेरे को algorithm solving नहीं आ रही थी, करूँगा कैसे मैं. So my issue was that I had a bunch of like, think of an appointment booking problem, right? There are a bunch of people in the office, and you would want to find the best times possible for all of them to come together so that we can finally decide and conclude on what is supposed to be happening. अब उसमें इशू ये आ रहा था कि मेरे को आउटपुट पता है, मेरे को इनपुट है ऑफ लाइक डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पीपल की डिफरेंट टाइम पीरियड्स, कि ये लोग, जैसे मुझे पता है कि सबके सब ऑफिस आते ही हैं, तो सवेरे 9 to 5 तो अवेलेबल रहे सबके सब, लेकिन मुझे ये पता है कि बीच में 1 घंटे का लंच होता है, तो वो भी हटा दो, राइट? सो आई हैव द टाइम पीरियड्स, ब्रॉड टाइम पीरियड्स ऑफ एवरीवन, प्लस आई हैव सम कैलेंडर्स ऑफ सम ऑफ द पीपल, बट सो वो मेरा इनपुट हो गया. मेरे का आउटपुट है कि फाइंड मी टाइम पीरियड्स और स्लॉट्स ऑफ 1 hour where all of them are available or majority of the people are available, plus the key management people should definitely be available. अगर वो available नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग available हैं कि नहीं है. ये 3-4 रूल्स थे. इन 3-4 रूल्स को फॉलो करते हुए और ये कैलेंडर को फॉलो करते हुए मुझे टाइम पीरियड निकाल के दो. ये प्रॉब्लम थी एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करूँ कैसे. सो मैंने रिवर्स किया एंड what I discovered was something called interval tree. There's some algorithm called interval tree, which is kind of like decision tree, but put on in interval trees. And वो interval tree जो है, वो basically it will then figure out कि which intervals are the most suitable intervals. So we're not trying to find the most overlapping interval. We're trying to find the most suitable interval where the key people are available plus majority of the other people are available.
So वो I've discovered the algorithm. जब algorithm मिल गया उसके बाद it became very easy because then I just explained कि भाई ये intervals हैं, इस तरह का डेटा है मेरे पास, ये इंटरवल्स हैं, ये इंटरवल ट्री एल्गोरिथम लगानी है, अब मुझे कोड दो। तो कोड आया, आई थिंक एक ही फर्स्ट या सेकंड ट्राई में काम कर गया वो। ठीक है जी, आई हैव ऑलरेडी ओवरशॉट द टाइम बाय जस्ट 1 hour, सो हैव अ गुड सैटरडे, हैव अ गुड Sunday. As most of you know, I am fairly available, so in case you have any questions or anything that you would like me to cover in the next sessions, do let me know. It seems like you guys will be curious how to use coding for such simpler tasks, right? So maybe the next session, Raki for you and Gagan for you, maybe next session can be about on this topic. Yeah, absolutely. Thank you so much, Talvinder, for sharing such great insights and inspiring us to use automation tools to reduce the human effort. Thank you so much. And thank you everyone for joining on Saturday for the session and sharing your engagement. Thank you so much. Also, bhai, एक चीज और last चीज कि if you guys liked it, which I guess some of you did, or most of you did, feel free to please post about this on LinkedIn. आजकल उसी का ज़माना है, so please post it on LinkedIn, what you learned, what you didn't learn, and what you would like to learn, or anything else. Please do that. Okay. Thank you. Thank you. Thank Take care. Thank you, Bye-bye. everyone. Thanks, Talvinder. Thanks, guys. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye.